Good morning, dear students. Today we shall study flow between two parallel plates. Consider a steady incompressible fluid flow between two parallel plates with constant fluid properties. If all the quantities such as velocity, density, pressure, temperature associated with the flow field remains unchanged with time, the motion is said to be steady. Otherwise, it is unsteady. If the density of a fluid is taken as constant throughout the flow field, then it is said to be incompressible fluid. Here, we have considered a steady incompressible fluid between two parallel plates with constant fluid properties. Let us take x-axis along the direction of the flow and y-axis at right angle to it. The motion is two-dimensional and therefore all the variables be independent of z coordinate. It means del y del z of all the variables is equal to 0. Therefore, motion is two-dimensional. Therefore, and a fluid is flowing along x-axis. Therefore, u is a function of x and y. Velocity v is 0, w is 0. And pressure is a function of x and y. And therefore, equation of continuity becomes, student, del u by del x is 0. On integrating this, we get u is a function of y only. And equation of motion, you know, students, rho dv by dt is equal to minus del p plus mu del square v. Or in components form, it can be written as rho del y del t. dy dt is the material derivative, na? You can write this as rho del y del t plus u del y del x plus v del y plus w del y del z, which is a function of u. I am taking along x-axis, which is equal to minus del p by del x plus mu del 2 by del x square plus del 2 by del y square plus del 2 by del z square into u. And since, students, you know, del y del t is 0, b is 0, w is 0, and therefore we get from here del 2 del z square is 0. Therefore, we get what? Rho is a function of what? Del y del t is 0. And we get here u del y del x, v is 0, w is 0, which is a function of, या साथ में u लिख लो लेना बाहर, u भी आएगा यहाँ स्टूडेंट्स, है ना, इज इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स प्लस म्यू और del 2 by del x स्क्वायर प्लस del 2 by del y स्क्वायर प्लस 0 इंटू यू साथ में, और you will get what? This 0 is equal to minus del p by del x plus mu del u by del y square, which is equal to 0. Right? ऐसे बाई कंपोनेंट का करेंगे स्टूडेंट्स, you will get del p by del y is 0. ऐसे ही आप z मोशन ही टू डायमेंशनल है तो उसमें भी del p by del z 0 और लेने की भी जरूरत नहीं है. You will get p is a function of x only and u is a function of y. तो ये पार्शियल डेरिवेटिव जो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑर्डिनरी में. and you will get what? minus dp by dx plus mu du by dy square is equal to 0. And this du by dy square is equal to what? 1 by mu dp by dx. Or du by, or integrating it, we get what? du by dy is equal to 1 by mu dp by dx into y plus a. Again integrating it, we get u is equal to 1 by 2 mu dp by dx y square plus ay plus b. A and b are arbitrary constants which can be determined by the boundary conditions of the given problem. Right? और boundary conditions के लिए हम क्या करते हैं अब? Now we are taking here plane Kuti flow. यहाँ से हमें boundary conditions मिल जाएंगी. In plane Kuti flow,
the flow is considered between two parallel plates in which one is stationary and the other is moving with constant velocity capital U. And students, in plane QT flow, pressure gradient we have to take 0. Now these are two plates. One is stationary and other is moving with velocity u, right? And pressure gradient is 0. Therefore, the equation which is u is equal to 1 by 2 mu dp by dx y square plus ay plus b, it becomes what? dp by dx is 0. We get here u is equal to ay plus b, right? And boundary condition, now see, boundary conditions are when y is 0, u is 0. When y is at h, the distance between two plates h, the velocity of the upper plate is capital U. On putting these boundary conditions, y is 0, u 0, we get what? V 0. On putting this y is equal to h at u is equal to u, we get here from here a is equal to upon u upon h. Now putting these values in which equation? In equation 7. Or we get what? We get here u is equal to u upon h into y. And here the non-dimensional velocity distribution in plane QT flow is equal to u upon u is equal to y upon h. We get this, which shows that the velocity distribution is linear in plane QT flow. Now I am taking next one, plane Poisson flow. In plane Poisson flow, we have to take what? In plane Poisson flow, the flow is considered between two parallel plates in which both plates are kept at stationary and pressure gradient is taken to be non-zero. In this case, pressure gradient is taken to be non-zero. Or let the distance between the two plates 2b and axis of x. For the sake of convenience, it is taken in the middle of the channel. And axis of x जो है, for the sake of convenience, we have to take this in the middle of the channel. Right? ये देख लीजिए आप. यहाँ क्या है? At distance y is equal to minus b. Right? और velocity ये क्या है? u 0 है. ऊपर भी u 0 है. y जो है b है. नीचे y माइनस b है. तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ क्या होगी? y is equal to plus minus b at u is equal to 0. राइट? एक बार हम क्या पुट करेंगे? y is equal to b, u is equal to 0 में एक बार y is equal to minus b, u is equal to 0 पुट करेंगे, we get this. राइट? पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा? y is equal to b, u is equal to 0, y is equal to minus b और u is 0. Putting these values we get what? u is equal to 1 upon 2 mu dp by dx y square plus ay plus b. और at y is equal to b u is 0, इसमें भी पुट करेंगे. ये कर दिया, y माइनस बी किया तो हमारे पास इक्वेशन 8 आ गई. 7 और 8 को हम सॉल्व करेंगे a के लिए. ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे एक को दूसरी में से, तब हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. या फिर ऐड कर देंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी. जो भी here we have got a is equal to 0 and b is equal to minus 1 upon 2 mu dp by dx b square. Now substituting these values a and b, putting these equation 9 and 10 in which equation? In 6. कौन सी है वो इक्वेशन? हाँ 6 ही है, उसमें पुट कर दिया. We get here u is equal to minus 1 upon 2 mu dp by dx into b square minus y square. इक्वेशन 11 आ गई. राइट?
Equation 11 is the velocity distribution for plane Poisson flow. ये velocity distribution आ गया plane Poisson flow के लिए. And this velocity distribution देखो students, b square minus y square आ रहा है, तो क्या है ये? This is parabolic. Because in equation 11 there is a term y square which shows that it has parabolic velocity distribution. Right? Parabolic velocity distribution है. Since from equation 11 it is clear that velocity u is maximum when y is equal to 0. देख लीजिए स्टूडेंट्स, वेलोसिटी जो है वो क्या है? मैक्सिमम है. मैक्सिमम कहाँ है? जहाँ वेलोसिटी ये जो वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेयर? व्हेन y इज इक्वल टू 0. तो हमारी u जो है um हो जाएगा व्हेन y इज इक्वल टू 0. तो पुट कीजिए इक्वेशन 11 में. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 0 in equation 11, and we get students um is equal to minus 1 upon 2 mu dp by dx b square, and um is equal to minus b square upon 2 mu dp by dx. Hence the velocity distribution in Poisson flow and which is non-dimensional form. Now divide this pitch equation 11 by 12. We get u upon um is equal to minus 2 mu dp by dx into b square minus y square upon minus b square upon 2 mu dp by dx. कट हो गया सब. We get 1 minus y square upon b square. u upon um, ये जो आया हमारे पास velocity distribution, it is equal to what students? ये हमारे पास आ गया 1 minus y square upon b square. Right? अब हम ले लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कॉन्स्टेंट्स फाइंड कर रहे हैं जो भी हमारे पास वेलोसिटी का आया, और वहाँ से हमारे पास नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है. पहला कौन सा लिया? प्लेन कुटी फ्लो, प्लेन पॉइसन फ्लो. नाउ वी आर टेकिंग दिस जनरलाइज्ड प्लेन कुटी फ्लो. इन जनरलाइज्ड प्लेन कुटी फ्लो में क्या करेंगे? Here we have to take this pressure gradient. जीरो ले लेंगे. Right. अच्छा, in generalized plane collective flow, the flow is considered between two parallel plates, है ना? Which one is stationary and other is moving with constant velocity u, and the pressure in generalized plane कुटी फ्लो में प्रेशर ग्रेडियंट इज 0, और नौ इसमें क्या होता है? होगा तो वही, लोअर प्लेट स्टेशनरी, upper plate moving with velocity u, or here we have to take this pressure gradient is non-zero, not equal to 0. In plane Kuti flow this is 0, but in generalized plane Kuti flow it is not equal to 0. Right? Here also very easy, simple. Here let h be the distance between two parallel plates. The boundary conditions are क्या हुई फिर? Lower plate is stationary, therefore u is 0, y is 0. Upper plate is moving with velocity u, and y is equal to h, distance between. And now what we have to do? We have to put these boundary conditions. Now we have this equation 6, right? This is the exact solution of Navier-Stokes equations for the flow between parallel plates. ये है u, ठीक है? ये है exact solution.
ऑफ ही एग्जैक्ट क्या, फिर हम ए और बी फाइंड कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशंस लगा के। वो कहाँ से लगाई हमने, प्लेन कुटी फ्लो से, प्लेन जनरलाइज फ्लो कुटी फ्लो और प्लेन पॉइजन फ्लो। नाउ सॉल्विंग क्वेश्चन 6 फॉर ए एंड बी के लिए करेंगे। अप्लाई करो बाउंड्री कंडीशंस, बाई 0 यूज 0, पुट दिस वैल्यूज, we get from here b is equal to 0. Next is y is equal to h, u is equal to capital U. Put these values, we get from here u is equal to 1 upon 2 mu dp by dx and y is equal to h, students. Therefore we get h square plus ah plus b, and from here we get u is equal to this one, right? Or we are going to find what? We have to find a is equal to, कर लिया हमने रीअरेंजमेंट, तो क्या हो गया, a is equal to u upon h minus 1 upon 2 mu dp by dx into h. Now putting the values of a and b from equations 7 and 8 in which equation? In equation 6. Or we are getting here from here u is equal to, substitute किया 1 upon 2 mu dp by dx by square plus u upon h minus 1 upon 2 mu dp by dx into h into by plus this 0 b 0, है ना। ये क्या पुट की हमने वैल्यू, a की पुट की इंटू बाई इज इक्वल टू एच है, ठीक है। रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, पुट कर दिया ना स्टूडेंट्स, हाँ। ए की वैल्यू जो थी वो एच आ गई, पर यहाँ जो है साथ में क्या लगेगा, ए वाई है, ए की पुट कर दी, बाई लगा ये साथ में, एच तो ये अंदर है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे u, अभी u अपॉन एच इंटू बाई हो गया, प्लस 1/2 म्यू dp बाई dx बाई स्क्वायर हो गया, माइनस ये अंदर आ गया h अपॉन 2 म्यू dp बाई dx इंटू बाई, राइट, u अपॉन एच इंटू बाई, राइट स्टूडेंट्स। यहाँ से ये कॉमन ले लिया हमने, ठीक है, h अपॉन 2 म्यू लिया ना, और dp बाई dx लिया, साथ में बाई लिया, ये वाला कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, बाई अपॉन एच माइनस 1 ऑफ वी गेट फ्रॉम हियर u अपॉन u इज इक्वल टू दिस बाई अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन, रीअरेंजमेंट कर रहे हैं, देखो सारा कुछ लिखा ही है पूरा, जब कैलकुलेट करोगे ना आप, सारा कुछ कैलकुलेट करोगे तो एक क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हो जाएगा ना, हाँ। तो u अपॉन u इज इक्वल टू बाई अपॉन एच माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 म्यू u dp बाई dx बाई अपॉन एच 1 माइनस बाई अपॉन एच। दिस इक्वेशन 9 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इक्वेशन 9 रिप्रेजेंट द नॉन डायमेंशनल velocity distribution for generalized plane quantity flow। ये जो है दिस इज रिप्रेजेंट द नॉन डायमेंशनल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर जनरलाइज्ड प्लेन क्विटी फ्लो। तो लिसन स्टूडेंट्स, ये सारा करने के बाद बट यू हैव टू डू, इन क्वेश्चंस को ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैसे, डिस्कस द स्टेडी फ्लो, राइट ऑन, ये करने हैं आपने, लिखने हैं, इतना मैंने करवा दिया, 2-3 ने करवा दिए, नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चंस, इसी में है क्वेश्चन, पर लिखने हैं, उतना ही लिखना है। डिस्कस द 3 क्वेश्चन 4 दे रही हूँ, कैसे करने हैं इसी में से बनाना है आपने। डिस्कस द स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, 1 क्वेश्चन, and second one you have to find, obtain the velocity distribution in flow of viscous
incompressible fluid between two parallel plates in plain Poisson flow. What you have to do बेटा, ये मैंने बताया, यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, उतना उतना ये करना है आपने इसी से. Obtain the velocity distribution in flow of viscous incompressible fluid between two parallel plates in plane Poisson flow. And one more question you have to do. You have to find, discuss the steady flow of a viscous incompressible fluid between parallel plates in plane quantity flow. Discuss steady flow of a viscous incompressible fluid between parallel plates in plane quantity flow. That's all. ये सारा करना है आपको. You have to do. Thank you.